राग रामकली महला पंजमा घर दूजा। चार पुकारै ना तू मानै, घाट पिए का बात वखानै। दस दष्टि मिल एको कहा, ता पी जोगी भेद न लिहा। किंकरी अनूप वाजै, जोगिया मतवारो रे रहाओ। प्रथम वस्या सद का खेड़ा, तृतीय मैं किश पिया दो तेरा। द्वितीय अर्धो अर्ध समाया, एक रहा ता एक दिखाया। एक कै सूत परोए मनिय, गांटी पिन पिन भिन्न भिन्न तनिय। फिरती माला बौबिद पाए, खिंचिया सूत न आई थाए। चौ में एक मठ है किया, तै बखै थान अनक खिड़कियाँ। खोज खोज द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। एहो किंकरी नूप वाजै, सुन जोगी के मन मीठी लागै। रहाओ दूजा। रामकली महला पंजमा। धागा करके लाई बिगली, धागा करके लाई थिगली। लो नाड़ी सुआ है अस्ति, अंबे कै का डंडा धरिया। क्या तू जोगी गर्भै परया। जब नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई। रहाओ गहरी विभूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंदरा तारी। मांगै टूका तिरपत न पावै, नाथ छोड़ जाचै लाज न आवै। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंजी वाजे नित उदासेरा। गुर गोर की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवै जाई। जिसनु होआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला। नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्तर। यह जपिया नाथ दिन रहनाई, हुण पाया गुर गोसाई। रहाओ दूजा। रामकली महला पंजमा। करण करावन सोई, आन न दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रेहा रस मीठा, गुरमुख किनै विरलै डीठा। रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम, पवित अमर पे न काम। तन मन शीतल अग्नि निवारी, आनंद रूप प्रगटै संसारी। क्या देवों जा सब किस तेरा, सद बलहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजया, गुर कृपा ते नीच निवाजया। खोल कवाड़ा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कौ नानक सब पड़दा टूटा, हूँ तेरा तू मैं मन बूटा। रामकली महला पंजमा। सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव। सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हूँ सद बलहारी। काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे आनत तूरे सतगुर। रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहाल दे जस धीर। जाके बंधन काटे राय, सो नर बौर न जोड़ नी पाए। जाके अंतर प्रगट्यो आप, ताको नाई दुख संताप। लाल रतन तिस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन लै तरया। ना किछ भरम न दुविधा दूजा, एको एक नरंजन पूजा। जत कत देखियो आप दयाल, कौ नानक प्रभ मिलै रसाल। रामकली महला पंजमा। तन ते छुटकी अपनी धारी, प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी। जो किछ करे सो मन मेरा, मीठा ता ए अचरज नैनो डीठा। अब मोय जानी रे मेरी गई बलाए, बुझ गई तृष्ण निवारी ममता। गुर पूरै लियो समझाए। रहाओ कर कृपा राख्यो गुर सरना, गुर पकड़ाए हर के चरना। बीस बिसोए जा मन ठहरानै, गुर पार ब्रह्म एक ही जानै। जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास। ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चालै एक है भाई। जाको गुर हर दिए सूका, ताको बहु न लागै दुखा। आपे आप सर प्रतिपाल, नानक रातो रंग गोपाल। रामकली महला पंजमा। मुख ते पड़ता ठीका सहित, हिरदय राम नहीं पूरन रहत। उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै, अपना किया आप न कमावै। पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित। रहाओ आगे राख्यो साल गिराम, मन कीनो दे दस विश्राम। तिलक चढ़ावे पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए।
कट कर्मा और आसन धोती पाग गठ ग्रह पड़ै नित पोथी माला फेरै मंगै विभूत ए बिद कोई न तरियो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रैगुण की उस उत्तरी माए चतुर्भेद पूर्ण हर नाय नानक तिसकी सरनी पाए। रामकली महला पंजवा। कोट बिगन नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई करतार जिसै सहाई होए भगवान भगवान अनक जतन ओआ के सरंजाम रहाओ करता राखै कीता कौन कीड़ी जीतो सगला पवन बेअंत में माता की केतक बरन बल बल जाइए ताके चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल मैं परवान जाको ठाकुर दिया मान सात संग मिल पे प्रगास सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास। रामकली महला पंजवा। दोष न दीस जय काऊं लोग जो कमावन सोई भोग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जान माया धंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास पिया पूरे गुर बचनी रहाओ तन धन कलत मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूड़ नाम बिना होए जासी धूड़ परम पूले बाध हंकारी संग नाई रे सगल पसारी सोग हरक में दे बिरदानी साखत एव ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाए यो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जस टूटा कट कट रमैया तिन ही डिठा। रामकली महला पंजवा। पंच शब्द है पूरन नाद आनंद बाजे अचरज बिस्माद केल करे संत हर लोग पा ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सूख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण राव ऊहा सिमरै केवल नाम बिरलै पावै ओ बिसराम भोजन पाओ कीर्तन आधार नैचल आसन बेशुमार डिग न डोलै कथु न धावै गुर प्रसाद को एह महल पावै भरम पै मोहे न माया जाल सुन समाद प्रभु कृपाल ताका अंत न पारावार आपे गुप्त आपे पसार जाके अंतर हर हर स्वाद कह न जाई नानक बिस्माद। रामकली महला पंजवा। पेटित संग पा ब्रह्म चिताया संगत कर संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत ए मन संतन के बलहारी ए मन संतन कै बलहारी जाकी ओट गई सुख पाया राखे कृपाधारी रहाओ संतै चरण तोए तोए पीवा संतै दर्श पेक पेक जीवा संतै की मेरा मनास संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पड़दा संत प्रसाद मोए कबू न कटदा संतै संग दिया कृपाल संत सहाई पे दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गैर गंभीर अपार गुणतास जी जन सगले प्रतिपाल नानक संतै देख निहाल। रामकली महला पंजवा। तेरा काज न गृहो राजमाल तेरा काज न बिखै जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै हरा नाम संग तेरा चलै राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कह रहा बिन हर सगल निरारथ काम सोई ना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इया उआ तेरो उज्जल मुखा कर कर थाकै वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपै जन कोय ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म पार हर संत करै सोई परवान नानक दास ताकै कुर्बान। रामकली महला पंजवा। संचय दर्भ दे सुख लो संचय दर्भ दे दुख लोग तेरे काज न वरा जोग कर हंकार होए वरतै अंध जम की जेवड़ी तू आगे बंद छाड़ वडानी तात मूड़ै इया बसना रात मूड़ै
माया के माते ते उठ चलना, राच रहो तू संग सुपना राव। बाल बविस्ता बारक अंध पर जोबन लागा, दुर्गंध तृतीया बविस्ता संचय माए, बिरद प्यास छोड़ चलियो पिछुताए। चिरंकाल पाई दुर्लभ दे, नाम बिहूनी होई खे, पशु प्रेत मोगते बुरी, तिसना बूझे जन ए श्री। सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छडावो छुटके बंद, बख्श मिलावो नानक जागंद। रामकली महला पंजवा। कर संजोग बनाई काश, तिस संग रहो याना राच, प्रतिपारै निसार समारे, अंत की बार ऊट सिदार। नाम बिना सब झूठ प्राणी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, ते सब माया मूठ प्राणी। राहो तीर्थ नाय न उतरस मैल, कर्म धर्म सब हो मैं फैल। लोक पचारे गत नहीं होए, नाम विहुनै चल सै रोए। बिनहर नाम न टूटस पटल, सोधै शास्त्र सिमरत सगल। सो नाम जपै ज साप जपाए, सगल फला से सूख समाए। राखन हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ। जित लावै तित लागै स्वामी, नानक साहिब अंतर जामी। रामकली महला पंजवा। जो किश करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना। डोलन ते चुका ठहराया, मत माए ले सत समाया। दो गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन में मानी। महापुरख का संग पया रहा, सगल पवित्र सर्व निर्मला। जो वर्ताए सोई भला, जय राखै सोई मुक्त थान। जो जपाए सोई नाम, हर सर तीर्थ जय साध भगत रै। तै बकुंठ जय नाम उचरै, सर्वनंद जब दर्शन पाइयै। राम गुना नित नित हर गाइयै। आपे घट घट रहा व्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप। कपट खुलानै परम नाटे दूरे, नानक को गुर भेटै पूरे। रामकली महला पंजवा। कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान। अनेक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमक हृदय वसै। हर के नाम की वडियाई, कीमत कह न जाई राव। सूरबीर तीर्ज मत पूरा, सहज समात तुन गैर गंभीरा। सदा मुक्त ताके पूरे काम, जाके हृदय वसै हर नाम। सगल सुख आनंद रोग, समदर्शी पूर्ण निर्जोग। आए न जाए डोले कत नाई, जाके नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरे चिंद। नानक को गुर दिया नाम, संतन की टहल संत का काम। रामकली महला पंजवा। बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ, आगे मिली न थाम थाओ। गुर पूरे की चरनी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग। हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै। पौजल पार पड़ला रहाओ, नाम निदान त्याई मन अटल। ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो। ता तेरा होए निर्मल जियो, सोध 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 विचारा। बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध के संग। मन तन रापै हर के रंग, छोड़ सियान बहु चतुराई। मन बिन हर नावे जाए ना खाई, दयाधारी गोविंद गोसाई। हर नानक टेक टिकाई। रामकली महला पंजवा। संत के संग राम रंग खेल, आगे जम से होए न मेल। ऐम बुध का पया विनाश, दुर्मत होई सगली नाश। राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म खांड हंकार न काजै। कुशल सेती कर जाए पंडित रहो, हर का जस निध लिया लाभ। पूर्ण पे मनोरथ साब, दुख नाठा सुख कर में आया। संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जन पाया दान। तिस जन होए सगल निदान। संतोख आया मन पूरा पाए, फिर मांगन काहे जाए। हर की कथा सुनत पवित, जेवा बक्त पाई गत मित। सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम भाई। रामकली महला पंजवा। गो कर पकड़ी न आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। को नानक जो त्याग देई, तब ओ चरनी आए पई।
सुन संतो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा भेटत उदार। राव जब उसको कोई देवे मान, तब आप पशु पर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरै, तब वो सेवक सेवा करे। मुख बैरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कही न समावे। उन मोहो बहुते ब्रह्मंड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगै सो भूखा रहै, इस संग राचै सो कछु न लहै। इसै त्याग सतसंगत करै, वडभागी नानक ओ तरੈ। रामकली महला पंजवा। आत्म राम सर्व मैं भेख, पूरन पूरया प्रभेक। रतन मोल हृदय में जान, अपनी वस्तुआ पछान। पी अमृत संतन प्रसाद, वड्डे पाग होवै तो पाइयै। बिन जेवा क्या जाने स्वाद, रहाओ 8-10 भेद सुनै कै डोरा। कोट प्रगास न दिसै अंधेरा, पशु प्रीत खास संग रचै। जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहा प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावै, नानक तिन जम नेड़ ना आवै। रामकली महला पंजवा। दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास निरास ए बित। काटी बंधा सेवा लाए, हर भगत राम गुण गाए। बाजे आनंद बाजा, रसक रस गुण गावे हर जन। अपने गुरदेव निवाजा, राव आए बन्यो पूर्बला भाग। जन्म जन्म का सोया जाग, गई गिलान साध के संग। मंथन रातो हर कै रंग, राखे राखनहार दयाल। ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभ कीनी दया। बूढ़त दुख में काढ़ लिया, सुन सुन उपजो मन में चाओ। 8 पैर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम गत पाई। गुर प्रसाद नानक लिवलाई। रामकली महला पंजवा। कौडी बदले त्यागै रतन, छोड़ जाए ताऊं का जतन। सो संचय जो होशी बात, माया मोहा टेढ़ो जात। अभागै ते लाज नाही, सुख सागर पूरन परमेश्वर। हर न चेत्यो मन माई, राव अमृत कौड़ा बिख्या मिटी। साकत की बिद नैनो डिठी, कूड़ कपट हंकार रिजाना। नाम सुनत जन बिशु डसाना, माया कारण सद ही झूरै। मन मुख कबै न उस्तत करै, निरपौ निरंकार दातार। तिस्यों प्रीत न करै गवार। सब साहा सिर साचा शाह, वे मोहताज पूरा पातशाह। मोह मगन लपट्यो भरम गिरै, नानक तरियै तेरी मेहर। मोह मगन लपट्यो भरम गिरै, नानक तरियै तेरी मेहर। रामकली महला पंजवा। रैन दिन जपो हर नाउ, आगै दरगाह पाओ थाऊं। सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै होमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भे बिस्मादा। परम गत पावै हर सिमर प्राणी, रहाओ गान मिन देखो सगल विचार। नाम बिना को सकै न तार, सगल पावना चालै संग। पवजल तरियै प्रभ कह रंग, देही धोए न उतरै मैल। होमै व्यापै दुबदा फैल, हर हर औकत जो जन खाए। ताका रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पाल ब्रह्म दयाल। मन ते कबू न बिसर गोपाल, तेरे दास की होवां धूर। नानकी प्रभ शरदा पूर। रामकली महला पंजवा। तेरी शरण पूरे गुरदे, तुध बिन दूजा नाई कोय। तू समरथ पूर्ण पाल ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म। तरन तारण प्रभ तेरो नाव, एक का शरण गई मन मेरै। तुध बिन दूजा नाई ठाव, राव जप जप जीवा तेरा नाव। आगै दरगाह पाव उठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए। दुर्मत बिनसै राचे हर नाय, चरण कमल स्यो लागी प्रीत। गुर पूरै की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै। अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाए। पाया लाभ सच्चा तन लाए, तोट ना आव्या कुट पंडार। नानक भगत सोहे हर द्वार। रामकली महला पंजवा। रतन जवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान। सूख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता।
मेरे राम को पंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाओ। कीर्तन नरमोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा आनंद बाणी पूंजी संतन हत राखी कुंजी। सुन समाद गुफा तयासन केवल ब्रह्म पूरन तय बासन। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरक न सोग न जन्म न मरत। कर कृपा जे साब देवाया साध संग तिन हर तन भाया। दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। रामकली महला पंजवा। मैं मन जाने भेद ब्रह्मा नहीं जाने भेद। अवतार न जाने अंत परमेश्वर पाल ब्रह्म बेअंत। अपनी गत आप जाने सुन सुन अवर वखाने राव। शंकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव। देवियाँ नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता खेल आप बिछोड़े आपे मेल। एक पर में एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा। किशु काज न कियो जान सुरत मत नाई किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्मा किश न जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा व न कोई। भूलै चुकै प्रभ तेरे राव। रिद न बुध न सिद्ध प्रगास बिखै ब्याद के गाव में बास। करनहार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवों मन एव विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगणत जी का दाता जिसे जनावे तिन तू जाता। जो पायो तिस तेरी आस सगल राधे प्रभ गुणतास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवा। राखन हार दयाल कोट पव खंडै निमक ख्याल। सगला राधे जंत मिलिय प्रभ गुर मिलमंत। जीवन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी। कट कट राता मेरा प्रभ राहो। ताकि गही मनोट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माए पै आनंद। तारन तरन हर शरण जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार ऊंचे ते ऊंच अपार। सो मत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जे सापे दीजै। सूख सहज नंद हर नाव अन्न नानक जपया गुर मिलनाओ। रामकली महला पंजवा। सगल सियाणप छाड़ कर सेवा सेवक साज। अपना आप सगल मिटाए मन चिंदै सही फल पाए। हो सावधान अपने गुर स्यो आसा मनसा पूर्ण होवै। पावै सगल निदान गुर स्यों रहो। दूजा नहीं जाने कोय सतगुर निरंजन सोय। मान का कर रूप न जान मिली निमाने मान। गुर की हर टेक टिकाए अवर आशा सब लाए। हर का नाम माग निदान ता दरगा पावै मान। गुर का बचन जप मंत यह भगत सार तत्। सतगुर पे दयाल नानक दास निहाल। रामकली महला पंजवा। होवै सोई पलमान अपना भज अभिमान। अपना तज अभिमान दिन रैन सदा गुण गाओ। पूर्ण एही सुआओ। आनंद कर संत हर जप छाड़ स्यान बहु चतुराई। गुर का जप मंत निर्मल राव एक की कर आस भीतर। निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार। भवजल उतरै पार देवन हार दतार अंत न पारावार। जाके कर सर्व निदान राखन हार निदान। नानक पाया एव निदान हरै हर निर्मल नाम। जो जपै तिसकी गत होय नानक कर्म प्राप्त होय। रामकली महला पंजवा। दुलभ दे सवार जाय न दरगह हार। हलत पलत तुध होए वड्याई अंत की भेला ले छड़ाई। राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोवै। सोहेले अचरज पुरख ध्याओ राव। ऊठत बैठत हर जाप बिनसै सकल संताप। बैरी सब होवै मीत निर्मल तेरा होवै चीत।
सब ते उत्तम एक कर्म, सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म। हर सिमरन तेरा होए उधार, जन्म जन्म का उतरै पार। पूरन तेरी होवे आस, जम की कटिया तेरी फास। गुर का उपदेश सुनीजै, नानक सुख सहज समीजै। रामकली महला पंजवा। जिसकी तिसकी करमान, आपन लाए गुमान। तिसका तू तिसका सब कोय, तिसै राज सदा सुख होय। काहे परम भरमै बिगानै, नाम बिना किछ काम न आवै। मेरा मेरा कर बहुत पछतानै रहाओ, जो जो करै सोई मान लियो। बिन मानै रल होवै खे, तिसका पाना लागै मीठा। गुर प्रसाद विलै मन बूटा। वे परवाह अगोचर आप, आठ पैर मन ताक को जाप। जिस चित लाए बिनसै दुखा, हालत पल तेरा उजल मुखा। कौन कौन उदरै गुण गाए, गन न जाय कीम न पाए। बूढ़ लोए सात संग तरੈ, नानक जिसै प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा। मन माए जाप भगवंत, गुरपूरै एव दीनो मंत। मिटै सगल भै त्रास, पूर्ण होई आस। सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कह न जाई। सच सच अलख भेवा राव, करन करावन आप। तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा कर नीत। सच सहज सुख पावै मीत। साहिब मेरा अत भारा, खिन मैं थाप थापनारा। तिस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै। नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जाका प्रताप। रामकली महला पंजवा। बिरथा प्रवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक। अवर छुट्टी सवास, अचिंत ठाकुर भेटै गुणतास। एको नाम त्याए मन मेरै, कारज तेरा होवै पूरा। हर 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 गुण गाए मन मेरे राव। तुम ही कारण करन, चरण कमल हर शरण। मन तन हर ओही ध्याया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसी की ओट सदीव, जाके कीनै है जीव। सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान। सब की रेन हुवीजै, आप मिटाए मिलीजै। आंदन ध्याइयै नाम, सफल नानक एह काम। रामकली महला पंजवा। कारण करन करीम, सर्वप्रतपाल रहीम। अल्लाह अलख अपार, खुद खुदाई वड बेशुमार। ओ नमो भगवंत गोसाई, खाल करव रहा सर्व ठाई। रहाओ जगन्नाथ जगजीवन माधो, पौ भंजन रिद माय आराधो। रखी केस गोपाल गोविंद, पूर्ण सरबतर मुकंद। मेहरवान मौला तू ही एक, पीर पैगंबर सेक। दिला का माल करे हाक, कुरान कतेब ते पाक। नारायण नरहर दयाल, रमत राम कट कट आधार। वासदेव बस्त सब ठाए, लीला किश लिखी न जाए। मेहर दया कर करने हार, भगत बंदगी देश सिरजनहार। कौ नानक गुर खोए भरम, एको अल्लाह पार ब्रह्म। रामकली महला पंजवा। कोट जन्म के बिनसै पाप, हर हर जपत नाहि संताप। गुर के चरण कमल मन वसै, महाविकार तन ते सब नसै। गोपाल को जस गाओ प्राणी, अकथ कथा साची प्रपूर्ण। ज्योति ज्योत समानी रहो, तृष्णा पूग सब नासी। संत प्रसाद जपया बिनासी, रैन दिन प्रभ सेव कमानी। हर मिलने की ए निशानी, मिटै जंजाल होए प्रभ दयाल। गुर का दर्शन देख निहाल, परापूर्बला कर्म बनाया। हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान। संत जना मस्तक निशान, दास की रेन पाए जे कोय। नानक तिसकी परमगत होए। रामकली महला पंजवा। दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान। तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए। जिस पेटत मिटै अभिमान, पाप ब्रह्म सब नदरी आवै। कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ,
गुर की कीर्त जपिय हर नाव, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापै तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजै, जब गोबिंद पढ़दै सब काजै, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरनी जाका मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा। रामकली महला पंजवा। किस परवासै बिछरै पवन, मूड़ मुग्ध तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जानै, पंच बटवारै से मीत कर मानै। सो कर सेव जतुदरै मीत, गुण गोविंद रविय दिन राति, साध संग कर मन की प्रीत। राव जन्म बिहानो हंकार, आरवाद त्रिपत ना आवे बिख्या साध, भरमत भरमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुतर माया। काम ना आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखन को दूसर नहीं कोय, तो निस्तरै जो कृपा होय। पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को कीजै दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, सन गई नानक प्रभ तेरी। रामकली महला पंजवा। ए लोकै सुख पाया, नहीं भेटत धर्मराया, हर दरगाह शोभावंत, फुन गर्भ नाही बसंत। जानी संत की मित्राई, कर कृपा दीनो हरनामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ। गुर के चरण चित लागा, धन तन संजोग सभागा। संत की धूर लागी मेरे माथे, किलविख दुख सगले मेरे लाथे। साध की सच टहल कमानी, तब होए मन सुध प्राणी। जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूटा। मिटाने सब कल कलेश, जिससे उपजै तिस में प्रवेश। प्रगटय अनूप गोविंद, प्रभुर नानक बख्शिंद। रामकली महला पंजवा। गऊ को चारे सारदूल, कौडी का लख हुआ मूल। बकरी को हस्ती प्रतिपालै, अपना प्रभ नदर निहालै। कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे, बरना साकू बहु गुण तेरे। रहाओ दिष्ट मांस न खाए बिलाई, दिसत मांस न खाए बिलाई। माँ कसाब छुरी सट पाई, कर्णहाल प्रभ हृदय बूटा। फाती मछली का जाला टूटा, सुके काठ हरै चलूल। ऊंचे थल फूल कमल अनूप, अग्निवारी सतगुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, अकृत घना का करे उधार। प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई। चरण कमल नानक शरनाई। रामकली महला पंजवा। पंच सिंह राखै प्रभ मार, 10 बखियारी लई निवार। 3 आवर्त की चुकी खैर, 7 संग चुके पै फेर। पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राख्यो दास अपना। सदा सदा साचा बख्शिंद। राव दाज गए तन पाप सुमेर, जप जप नाम पूजै प्रभ पैर। आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम पग जोरी सुखमान। सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो न फुन रोज। सिंध समायो खटकै माहे, करनहार को के सच रजनाए। जो छूटो तो जाए प्याल, जो काड्यो तो नदर निहाल। पाप पुन हमरे वसनाए, रसक रसक नान गुन गाए। रामकली महला पंजवा। ना तन तेरा ना मन तो है, माया मोह व्याप्या तो है। खुदम कुदम करे गाडर ज्यों शैल, अचिंत जाल काल चक्कर पेल। हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जब संग सहाई। गुरमुख पावे साच धना रहाओ, ऊने काज न होवत पूरै। काम क्रोध मद सद ही झूरै, करै बिकार जीड़े कै ताई। गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तोय अनक शल जानै। कौडी कौडी को खाक सिर,
छानै जन दिया तिस न चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल। पा ब्रह्म जब दे दयाल, ए मन हुआ साधरवाल। हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचे साच समाए। रामकली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए। निरपौ पे गोबिंद गुण गावत, सात संग दुख जाय राव। जाकै राम बसै मन माही, सो जन दूतर भेखत नाई। सगले काज सवारे अपने, हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास अंदेशा काहे करै। जन्म मरण की चुकी कान, पूरे गुरु पर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पा ब्रह्म जिस कृपा करे, सात संग सो भव जल तरै। अमृत पीवो साध प्यारे, मुकु जल साचे दरबारे। आनंद करो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरै पार। रामकली महला पंजवा। ईंधन ते बसंतर भागै, माटी को जल दे दिस त्यागै। ऊपर चरण तलै आकाश, घट में सिंध कियो प्रगास। ऐसा सिमरत हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन के। आठ पैर मन ता कहो जाप रहाओ, प्रथमे माखन पाछै दूध। मैलू कीनो साबन सूद, पैते निर्भाव डरता फिरै। होंदी को अनहोंदी हिरै, देही गुप्त बदेही दिसै। सगले साज कर जगदीसै, ठगनहार अन ठगदा ठागै। बिन वक्कर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बख्यान, सिमरत सास वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारै कोय, नान ताकि परमगत होए। रामकली महला पंजवा। जो तिस भावै सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई। प्रभ बिन नाही आन बिया रहाओ, पुत कलतर लक्ष्मी दिसै। इनमें किछु न संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना। माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विगुता। गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाने छोड़े नाही। जमदूत गरास्यो महा पया, बोले झूठ कमावे अवरा। तृष्णा बूझे बहुत होया, असाध रोग उपजा संत दुखन। दे विनाशी महा खया, जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे। आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखै। कर कृपा पा ब्रह्म मिया। रामकली महला पंजवा। ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी धूड़ काटै जमजाल। चरण कमल बसै मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के। जाकै मस्तक राखै हाथ, प्रभ मेरो नाथ को नाथ। पतित उदाहरण कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंथ दे जिस दान, तजै विकार बिनसै अभिमान। एक ध्याइयै साध के संग, पाप विनाशै नाम के रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रव रिहा गुनतास। दर्श दे हारियो प्रभास, नित नानक चितवै सच अरदास। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रव रिहा गुनतास। दर्श दे धारियो प्रवास, नित नानक चितवै सच अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅੰਗ 886 ਟੂ ਅੰਗ 900, ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਐਂਡ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿਆਖਿਆ was concluded at Ang 893 at Shabd number 34. So today I will start from Shabd number 35, Raamkali Mehla Panjma. In the first Shabd tonight which we are discussing, on which I will start with Vyakhya, it talks about the magnificence of Naam, the glory of Naam, the joy of singing his praises. Guruji says, Ratan Jwehar Naam. Naam is a Ratan Jwehar, Johar is a jewel and a ruby. It is very precious. Naam is very precious. And what does it give you? Sat Santokh Gyan. It gives you Sat, it makes you eternal, makes you Santokh, gives you contentment, and it gives you Gyan, gives you enlightenment. That's what Naam gives you. See, in Guru Granth Sahib Ji, the core concepts are very few only. One, and they're all about God and His creation. One is, of course, God is formless. He is everywhere. He is Ramya Hoya. And He has got infinite guna, virtues. And He is totally detached from all creation. You cannot reach out to Him by anything of Maya, of anything, because Maya is anything which is perishable. Since He is Sat, only anything which is Sat can reach out to Him, and Sat is Naam. Naam is His gun. And this gun can not be from anybody. This gun have to be shared with you by a Satguru, who is Sat himself. Otherwise, when you read, for example, a poet like Bulle Shah, he also talks about God. But reading Bulle Shah's poetry will not take you to God, because he is not your Satguru. Because Gurbani has told us that Satguru bina aur kachi hai bani. Bani ta kachi Satguru bajo aur kachi baaj aur bani ta kachi Satguru bajo aur kachi bani. Kende kache sunde kache kachi aanko khani. Hara relate kare rasna kaya kashu na jane. Even though Bulle Shah talks about God, Harar kahe, but nothing really is achieved because he is not your Satguru. Only the Satguru in his Sharan, when you do Naam and you sing God's praises, will the Naam be able to reach out to God's portal, his darbar, and attract His grace. And if you are very lucky, then He pulls you upwards with the Guru's grace, merges you with Himself, and He actually gives you darshan. So, as you sing His praises, the other core concepts are you must do ardas, you must constantly engage in prayer. मन तो खाताल है जा सिफ्त करे अरदास, सिफ्त करनी है तो अरदास करनी है. And of course, we must be in utter humility. The more humble you are, the more godliness will settle in you. The more hankar and homa you have, the more of your own ego will manifest, and Naam will not be able to settle in you. So, the core concepts are about 10, 12 only. And these concepts are actually repeated many times in Gurbani. So, for example, Ratan Jwehar Naam, Sat Santokh Gyan. When we read Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we find Thal vich tin vastu payo ki tin pastuwa Sat Santokh vicharo. Guruji has Sat Santokh, and he uses the word Gyan here. What he uses vicharo, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ. And Amrit Naam, and in this gun of God, in all of them, His Amrit Naam, His eternalizing elixir of His grace has been put in all His gun.
अमृत नाम ठाकर का पय जिसका सबसे आधारो. So Ratan Tvehar Naam Sat Santoh Gyan. And this Naam, Sukh Sahaj, it gives you not just normal Sukha, it's Sukh Sahaj. It's a poised peace. Daya ka pota. And also gives you daya. Gives you mercy and compassion for other beings. This is very important. Huh? This mercy for others. Because we have done so many things, so many mistakes and sinful actions and karam. And we always ask Him for His mercy to forgive us. When we don't forgive others, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ mercy ਦੇ? You must be merciful to others. There is a line in Gurbani which tells us, Nirdaya nahi jyot ujala. If you have no daya in you, His jyot will never forget. You must have compassion for all creation, for all beings. Sukh Sahaj Daya ka pota. Pota. The word pota is not pota as in grandson. His pota is a short form of the Persian word pota, khajana. ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. You'll get the treasure of compassion within you. ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ. And this treasure of Naam is granted, is bestowed upon his bhagats, upon his saints, the ones who take to his bhakti, prema bhakti. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ ਨਾਮ ਦਾ. ਤੇ ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਸ਼ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ. ਤੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਨਾ, ਖਾਓ ਖਰਚੋ. And what it means is practice godly virtues which are given to you by the Guru, which will settle in you. ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਸ਼ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ. ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾਵਾਰ. There is no limit to his graciousness, to the amount of mercy he can give you. Rahao. Kirtan nirmola khira. Now kirtan, it doesn't really mean sitting with a vaja and a tabla. Kirtan means ਉਹਦੀ kirti karni, ਉਹਦਾ jas karna, singing his praises. Singing his praises is a nirmola khira. Nirmola means it's a amol ratan. It's a priceless jewel. Anand guni ka hira. He gives you anand. So when you sing his praises, it gives you anand, bliss. And guni ka hira, it gives you so many deep and profound virtues. Guna aa jande a. Anand bani punji. And in the kirtan, as you sing his praises, it is latent. Anand bani. As you keep on singing his praises, you are singing with your tongue. Sometimes you are singing in your mind. And then it will trigger off Anand Vaje by itself. Androin. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Shabds will start from inside. You know, Tu Mera Pita, Tu Mera Mata. Shabds will start coming in. Ram, Rahim, Puran, Quran. Shabds androin. Gunja lag jaange. Anand Bani Punji and Santan Har Rakhi Kunji. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾ, ਸੰਤਨ here means ਗੁਰੂ. ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਆ. ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਕੁੰਜੀ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ. At Anga 204, that's one शब्द where Guruji tells us कि जिसका ग्रह तीन दिया ताला कुंजी गुर सोम पाई. ये कुंजी गुरु कोले आ. Nobody else can open the door to your dasma dwar. And then when we come to Anga 1, 2, 3, 7, Sarang Mela, Chautha, Var Sarang ki Mela, Chautha, we'll find Gur Kunji, Pahu Nival, Tan Kotha, Man Shat, Nanak, Gur bin Man ka tak na ugda. Without the Guru, the lock of the mind cannot be opened. Nanak Gur bin Man ka tak na ugda. Aur na kunji hath. Te hor kise kole kunji hai nahi, Guru kole hi hai. So when, I don't know where it started, when they say that the kunji of Guru Granth Sahib Ji is with Bhai Gurdas. I don't know who started that. Bhai Gurdas is a very respected writer, but the kunji is only with the Guru, nobody else. Santana Rakhi kunji. Sun samad gufa te asan. Now Naam will take you to a vasta where there is Sun samad. God is sitting in Sun samad, in eternal poise and peace,
ਉੱਥੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਪੂਰਨ ਤੈਬਾਸਨ, ਐਂਡ there only God himself resides. ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੈ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਅਵਸਥਾ if you reach there, you are beyond all kinds of hark na sog, khushi and gami. You are beyond happiness and sadness. You are in eternal bliss. We always want happiness. Actually, happiness is subjective. It's the opposite of sadness. But beyond sadness and happiness, at a higher level, is bliss. Eternal bliss. So, te hark na sog, na janam na mart. And ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਤਨ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ in this ਸ਼ਬਦ, it is given as his grace. We read Bani slowly, then with his grace it settles inside you. It becomes part of you. Sadh Sangat tin har tan paya. And of course in Sadh Sangat is very heavily recommended in Gurbani. Jithe ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, like ਸਾਧ ਸੰਗਤ, like here, or in any ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀਆਂ। You are my everything. Whatever I do is only with your grace, with your mercy, with your kindness. The next shabd, Guruji talks about the glory of the one Lord. He is infinite and no one can ever find his limits. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। Guru Sahib in the first pada tells us that no one can find his limits. ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬੇਦ। The Vedas do not know ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। They do not know the limit of his greatness. Brahme nahi jane ped. Brahma was supposed to be the very wise one who shared the 4 Vedas with the world, but ovini Vaheguru da ped janda. Avatar na jane ant. All the avatar, jehde 10 avatar hua, none of them Vaheguru da ant pa sakde hai. Very clear, ਇਹ avatar Vaheguru ਨਹੀਂ, Vaheguru ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। avatar na jane ant, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੇ। Of course he knows his extent, his vastness, his glory, his greatness, he knows. ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੇ। ਸੁਣ ਅਵਰੋ ਖਾਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। They have no personal first hand knowledge, experience of God, but they keep on talking ਕਿ ਰੱਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਆ ਕਰਦਾ। Then Guruji says, ਸ਼ੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭੇਵ। Shankar, Shivji is supposed to be a very great Deva. He has got many facets. Sometimes he is known as Rudra, sometimes he is known as Mahadev. When he is very deep down into his own meditation, he is known as Shankar. Shankar also does not know his mysteries. Shankara nahi jane pev, khojat hare dev. Sare devte na hamba gaye. Onu oda ant labde. Devya nahi jane maram. Sariyan deviyan. So many devis in the Hindu religion. None of them know his ped. Sab upar alak parbrahm. Alak is indescribable, the unseen Supreme Lord God is above all of them. And he, apne rang karta kel, he does as he wishes in his own play. Aap bishore appe mel, sanjog vijog doye kaal chalave. Ek par mein ek bhakti la, sometimes he puts some wonder around and some he, in his grace, he puts them to his devotional worship. So when you start doing Bani, you start taking to Naam, actually it's a sign that his grace is upon you. But it's not easy to do Naam. Guruji has told us, Akhan Oka Sacha Naam. It's not easy. It's very tough to do Naam. But you must persevere and slowly you find that you are not doing it.
you are actually enjoying the Naam and He has given you the love for Naam. वो आप बख्शिश करदा. अपना एक भरमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए. And translation says, by his actions he makes himself known. No, अपना किया आप जनाए. What it means is, कईयों ਨੂੰ अपना बना के आप दे प्यारे ज्ञान, आप बारे ज्ञान बख्शदा. अपना किया आप जनाए. Earlier Guruji spoke about those sun आँख वखाने. Now Guruji talks about the saints, the true bhagats who have been blessed by Guru's grace to reach out to him. संतन की सुन साची साखी. ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ. Listen to the true story of the saints. Here actually refers to the Guru. ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ. Whatever they are saying is not ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ. ਜਿਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ tells us ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ. Whatever I say is as you inspire me to say, as you show me, and I say, I express what is seen by me. ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ. ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ. ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ says, ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਓ ਰੇ. ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ. ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾਂ. ਜੋ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ. ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ. ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, they cannot be ever tainted by any pun or pap. See, it is not only papa, pun also. Pun also will bring you lekha. You will be rewarded. But to receive the reward, you must have some form. You must have some form, you must take some form. You must rise above pap and pun. You must rise above changyanya, buryanya, and merge yourself into his hukam, into his naam. Nahi lo lep tis punna pap, nanka prabh ape aap. God is himself, complete by himself. Raamkali Mela Panjma. In this shabd here, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ. Of course, this Sikh, we should be like what this Sikh is saying. ਕਿਛੂ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਓ ਜਾਨ. ਕਿਛੂ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਓ ਜਾਨ. ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਜ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ. ਨਾ ਕੀਓ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ. ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ. ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਮਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. See, Guruji is teaching us in how to approach the Guru in utter humility. You cannot stand in front of the Guru and say, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. You will never get whatever you wish, your wishes fulfilled. You must go to him as literally as a beggar. ਆਪਾਂ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ. He is a data, and you have to go to him in utter humility. ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ. ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਲ ਇਸ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਕੀਤੀ ਆ. ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੈਸਾ ਕਰਮ. ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. So, after saying that he doesn't have any knowledge and he claims no goodness, he says, Thakur Pritam Prabh Mere, O my beloved Lord and Master, in total surrender I come to you. Tudh bin duja avar na koi. I come to you and I go to no one else. Pule chuke ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ. ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਾਓ. ਰਿੱਧ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਰਿੱਧ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ. ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ. I have no miraculous powers.
ਬਿਖੇ ਬਿਆਦ ਮੇ ਗਾਵ ਮੇ ਬਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਖੇ ਬਿਆਦ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾਂ। I live in the village of corruption, sin and sickness. ਕਰਨਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are the one doer. ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਨ ਮੇ ਟੇਕ, but I have, my focus is only my take, my support, my asra is only your ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੋ ਮਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਐਂਡ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, it gives me poise and peace, consolation. ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, your ਨਾਮ destroys all my sins. ਤੂੰ ਅਗਣਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਸੰਖ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। You are the nourisher of my inner being. ਜਿਸੇ ਜਨਾਵੇ ਤਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਤਿਸ ਤੇਰੀ ਆਸ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਸਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਗਲ ਅਰਾਧੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਕੁਰਬਾਨ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, my merciful Lord, my Lord is always merciful, and ਬੇਅੰਤ, he is always infinite, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। Next ਸ਼ਬਦ also talks about the greatness of God. ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲ, apart from being very gracious in his bounties, he is also your protector, and he is also very merciful. ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲ, ਕੋਟ ਪਵ ਖੰਡੇ ਨਿਮਖ ਖਿਆਲ। ਕੋਟ ਭਵ, the word ਭਵ, ਪਬਾ ਵਾਵਾ, is a short form of ਪੁਆਂਟਣੀ, ਪੁਆਂਟਣੀਆਂ, cycles, incarnations. ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁਆਂਟਣੀਆਂ ਗੇੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਮਖ ਖਿਆਲ ਚ, ਨਿਮਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਦੈਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਗਲ ਅਰਾਧੇ ਜੰਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਮੰਤ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ। ਮੰਤਰ ਔਖਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਮੰਤ ਵਾ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ। Now my data is not only the provider of my physical body, he is the provider of my inner being. ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਮੀ, he is perfect, complete. Parmeshwar Swami, kat kat rata mera Prabhu. And in every heart he resides. See, Guru mentions this many times, oh kat kat vasiya. Har ek de vich vasda. Guru keeps on telling us that all of us have God inside us. Also, what Guru is telling us is that all of us have a chance to unite with Him. He is within ourselves. But the biggest challenge we find is going inwards. ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਟੂ ਗੋ ਇਨਵਰਡਸ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਫਰਟ ਟੂ engage only the mind and do everything to the mind, because ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। So it's very difficult to go inwards because we are so used to the external joys of life and the external distractions. जीवन का दाता मेरा प्रभु, पूर्ण परमेश्वर स्वामी कट कट राता मेरा प्रभु रहो। ताकि गही मन ओट, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਮੈਂ ਟੇਕ ਪਕੜੀ ਆ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟ, and as I enshrined him in my mind, as I held on tightly to him in my mind, ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟ, he broke away all my bondages. ਹਿਰਦੇ ਜਪ ਪਰਮਾਨੰਦ। Guru Ji is now saying not only with the tongue, on ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, in my heart I recited his name of the all
supreme, the embodiment of bliss, God Himself. Man maye paya anand. ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ. ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹਰ ਸ਼ਰਨ. ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, the one who can take you across the world ocean, I have taken his sanctuary. Jivan Roop Har Charan. His Charan, his Bani is the embodiment of life, is the nourishment of life itself. Santan ke pranadar. God is actually the adar, the asra, the support of the very breath. Uchete uch apar. See, as when you say Santan ke pranadar, on a worldly level we will say it is the lungs which are helping me breathe. Even mere pranadar dhar. But Bani says no. It is not the lungs who are helping you to breathe. It is God who is the one who created the lungs who is helping you breathe. So you have to go on a deeper level. At the core of your at the nucleus, at the deep nucleus of your consciousness, God Himself resides. So बड़ी डूंघाई दे विच जाना पैंदा, पर बाणी उत्थे लैके जा सकदी आ. आपां इकल्ले नहीं जा सकदे, ते गुरप्रसाद दे नाल उत्थे जा सकदे आ. संतन के प्राणदान ऊंचे ते ऊंच अपार. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਅਪਾਰ ਵਾ. ਸੋ ਮਤ ਸਾਰ ਜਿਥਾਰ ਸਿਮਰੀ ਜੈ. ਸੋ ਮਤ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪੇ ਦੀ ਜਾ. And in His grace He Himself blesses you with His loving worship. ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਰ ਨਾਮ. ਸੋ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ. ਨਾਨਕ ਜਪਿਆ ਗੁਰ ਮਿਲਣਾ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ. Next shabd, Guruji says, this is a shabd written in as a direct sikhya to all of us. So Guruji is telling us in this shabd, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ. ਸਗਲ ਸਿਆਣਪ ਛਾੜ. ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ. All your clever methods of trying to reach God, give them up. Rely only on Naam. Kar seva, sevak saj. Sevak ban ja. In other words, live in humility as Guru Sevak. Apna aap sagal mitaye. Home nu tyag de. Give up your self-conceit and your ego. Man chinde sahi par paye. Only then will you find that things become smooth for you and your wishes get fulfilled. हो सावधान अपने गुर से हो. सावधान. We have in Sukhmani Sahib, सावधान एकाग्र चित. In others, be conscious, be aware. Consciously attach yourself to your Guru. हो सावधान अपने गुर से हो. That means you must be aware कि मैं गुरु दा सिख हूँ. And always conduct yourself that you have a Guru caring for your every need. आशा मनसा पूर्ण होवे, पावे सगल निदान गुर स्यों. Let your wishes be fulfilled and all your treasures come only from your Guru. रहो. दूजा नहीं जाने कोई. गुरु ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਾ. ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ. ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ. The Satguru, well, the translation says, let no one think that God and Guru are separate. Even that translation is correct. God and Guru are the same. Sadguru Niranjan Soy. The Sadguru is himself Niranjan, the Immaculate Lord, who is actually beyond Maya. You cannot bribe the Guru. He is Niranjan. You can only plead with him. And when he is pleased with your devotion and he knows that you are sincere in your prayer, then he gives his grace. Sadguru Niranjan Soy. Manaka ka roop na jaan. Guruji says, this Satguru who you pray to, don't ever think of him in terms of a human being. Now this is very important for all of us. Manaka ka roop na jaan. Never ever meditate upon him or with a photograph in mind or a picture in mind.
anything physical in mind. वो मानक दा रूप नहीं गा, वो तो आप ज्योत हुआ, ज्योत स्वरूप हुआ. He is verily निरंकार himself. मानक का रूप न जान, मिली नहीं माने मान. And वो फिर मिल के ना निमाने नू मान बख्शदा. गुर की हर टेक टिकाए, उस ओदी दी ओट जेड़ी टेक ना संभाल के रख, टिका के रख. गुर की हर टेक टिकाए और आसा सबलाए. And give up all other hopes and what you call, लोकां दे जेड़े आसरे ना सारे छड़ दे. See, when we all face challenges in life, and we in our life ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. We have lots of contacts, sometimes we have good friends. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ. And when a issue arises, when we have some emergency which arises, we think, oh, this person will help me out. ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ. Your ask should be to your guru. Your guru may direct you to that person, but your ask, your first sort of recourse should always be the guru. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੂਗਾ. ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਬਲਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਨਿਧਾਨ. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਂ. ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਪ ਮੰਤ, ਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਪ. See, the word mantra in the Hindu context, it means any word or phrases which are used in a particular time, at a particular way, in a particular form, uttered in a particular at a particular time, and you can actually vas kar sakda, you can actually control a Devi Devta to give you what you want. As far as Gurbani is concerned, Naam is also a mantra, but there is no way you can use Naam mantra and control God. What Naam mantra does is, it cuts away all your karmic baggages, cleanses you, purifies you, attracts the Guru's grace, and you can plead for his darshan, plead for union with God. You can attract his grace, but you cannot control God with Naam mantra. So Gurbani is totally different. Huh? We go in utter humility and plead with him, and he then comes forward when he is pleased, when he feels that ऐसे जन विले जग निर्मल परख खजाने पाया. ओ परखदा, he will check, he will test you first, and whether you deserve to be put in खजाना. गुर का जप मंत, गुर का बचन जप मंत, इहा भगत सार्थत. इथे नाम दी ना असल भगती आ. सतगुरु पय दयाल, नानक दास निहाल. जो सतगुरु दयाल हुंदा ना, वो जेड़ा दास हुंदा, in utter humility he सेवक, वो निहाल हो जांदा. He comes into bismad, he becomes enraptured, inner bliss. Raamkali Mela Pinwa. Next shabd, Guruji says, we must accept his will. It must not be even a grudging acceptance. ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, it's very very tough. ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਪਲਮਾਨ. ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ. You see, we all try to drive as carefully as we can. But sometimes an accident occurs. ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. Everything that is happening, ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਵਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. And you have to say, ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਰਿੰਗਿਟ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ. Accept his will. And as you keep on accepting his will, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, you will find that you start merging into his will. Once your ego gets eroded and you merge into his will takes over
everything is resolved, because in His will everything becomes easy and perfected. सोई होवे सोई पलमान, अपना तज अभिमान, अपना अहंकार छड़ दे, दिन रैन सदा गुण गाओ, पूर्ण यही सुआओ. Night and day sing His praises. This is the मनोरथ, ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ. ਆਨੰਦ ਕਰ ਸੰਤ ਹਰ ਜਪ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਪ. ਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਏ, ਗਿਵ ਅਪ ਆਲ ਯੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ. ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪ. ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਆਸ ਪੀਤਰ, ਪੀਤਰ ਮੀਨਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ. Inside, deep within you, you must have faith only in one. Nirmal jap, naam har har. Hari da naam ਸੁੱਚਾ ਵਾ, ਪਿੱਤਰ ਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਵਾ. ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ. ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਅਤੇ then you will be taken over the world ocean. ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, he is the only ਦਾਤਾ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵਾ. ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ. ਰਾਖਣਹਾਰ ਨਿਧਾਨ, see the word ਨਿਧਾਨ here is ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਗਲ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ. ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਧੱਦਾ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ, ਧੱਦਾ is ਖਜ਼ਾਨਾ. Then the next line, ਰਾਖਣਹਾਰ ਨਿਧਾਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ. The sound is the same. One in ਨਿਧਾਨ, one in the other one is ਨਿਧਾਨ. ਨਿਧਾਨ with ਧੱਦਾ means ਖਜ਼ਾਨਾ. ਨਿਧਾਨ means ਅਖੀਰ ਤੇ. ਰਾਖਣਹਾਰ ਨਿਧਾਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ. ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ. ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਹਰੇ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ. Anyone who sings His praises eventually finds that he will reach towards emancipation. ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. Next ਸ਼ਬਦ Guruji tells us, Naam stays with you forever, even when you leave your body. Guruji tells us, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ. ਜਾਏ ਨਾ ਦਰਗੇ ਹਾਰ, do not go to His court in a ruined state. ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ. ਹਲਤ ਪਲ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੂਗਾ. ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ. God is everywhere. See, Gurbani is quite different from a lot of other teachings, of other religious teachings. The religions which tell you that God is in the seventh heaven, Gurbani says no. God is everywhere. He's pervading every pore, every fiber of the universe, every cell, every aspect of the universe. He is there. He is in the very fabric of the universe. Even in vacuums He is there. So, and wherever He is complete and perfect. Except that He operates on a plane which cannot be seen by the physical eyes, but He is there. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਰਗਾਹਾਰ, ਹਲਤ ਪਲ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ, ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਲੈ ਛਡਾਏ. ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ. The Lord who is all pervading, sing His praises. Halt palt hoye doe suhele. Here and hereafter you will find everything is peaceful. Achaj purkhtyao. Sing of the wondrous Lord. Utठ बैठ सर जाप, हर समय ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ. ਬਿਨ ਚਾਹੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ. ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ. You find as you keep on doing Naam, your aura will become so positive. Even your enemies will find the end of the day, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ. Let's be friends with Him. ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ. And internally you will get purified. ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਏਕਰਮ. This is the best exalted deed to sing His praises. ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ. ਸਾਰੇ, even in Sukhmani Sahib we are told, ਸਭ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ. It's the same meaning here. ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਏਕਰਮ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ. ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਉਦਾਰ. ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੇ ਭਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੇਖਾ ਲੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਸ, ਜਮ ਕੀ ਕੱਟੀਏ ਤੇਰੀ ਫਾਸ. ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ. ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀ ਜੈ. Not when it says ਸੁਣੀ ਜੈ, it doesn't only mean listen,
What it means is hark, listen, adhere to it, follow. ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। The next shab Guruji tells us everything belongs to God. Our ego makes us think otherwise. जिसकी तिसकी करमान, जिसकी चीज, जिन्हें तेनू चीज दिती ना, everything, regard everything as belonging to his rightful owner. जिसकी तिसकी करमान, अपन लाए गुमान. Get rid of your ego, dispose of your ego. जिसकी तिसकी करमान, you buy a new car. You must live in शुकराना, मैनू रब ने गड्डी दिती है, नवी गड्डी दिती है. If you keep on saying, well, I worked so hard and managed to get a car, it is actually an expression of your ego. उन्हें तेनू दिती आ. जिसकी तिसकी करमान, अपन लाए गुमान. जिसका तू तिसका सब कोई. सारे एक तो ही पैदा होया, तिसे आराध सदा सुख होए. ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲੂਗਾ. ਕਾਹੇ ਪਰਮ ਭਰਮੇ ਬਿਗਾਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ. ਬਿਗਾਨੇ ਮੀਨਸ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ. ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਿਛ काम न आवे. Besides नाम, nothing will work for you. मेरा मेरा कर बहुत पछताने, मेरा मेरा कर देना, बहुत पछता के गए थे राव. See, everything is given by him. Once you have an attachment to anything, किसी नाल किसी चीज़ नाल ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਪਕੜੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ. Once you keep on saying कि ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, then it becomes his kudrat. It becomes his. So between kudrat and maya is whether it's your possessiveness or whether you say it's his. And तेरी कुदरत को कुर्बान, कुदरत का उन कहाँ विचार वर्ण जाओ एक बार, जो तुझ पावे साहब पलिकार, it's his. जो ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ. ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ. ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਮਾਨ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸ. ਬਿਨ ਮਾਨੇ ਰਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਟ ਹਿਜ਼ ਵਿਲ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਡਸਟ ਐਨੀਵੇ. ਜਿਸਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੇ ਮਿੱਠਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉਠਾ. ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ. God himself is independent, carefree, imperceptible. ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਤਾਕੋ ਜਾਪ. Always sing his praises. ਜਿਸ ਚਿਤ ਆਏ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁੱਖਾ. ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਲਤ ਪਲ ਤੇਰਾ ਉਜਲ ਮੁਖਾ. ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਹਿਮ ਵਿਦ ਲਵ. ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਨ ਪਾਏਗਾ. ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ. ਕਿਤਨੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ. ਗਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਏ. ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ 'ਤੇ. ਬੋੜਤ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿ. ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ. ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦਾ. ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. Guruji ਜੀ then tells us, this is another shabd which talks about the amazing power of Naam. Man maaye jaap Bhagwant. See, this is again and again, Guru tells us. See, we start always with the rasana, with the jeep. But here Guruji say, man de vich onu japna. You have to recite his name within your mind. Now it's very difficult to do that. Very difficult to do that because we are so used to the external. So to go deep inwards, and to recite only in the man is very tough. One of the ways you have to train your mind. We are so used to reading part loudly. Tell yourself, no, I'm going to read the same part, but I'm going to read it silently in my mind. You'll find it so tough to do that. But you persist at it. After a few days, you'll find that you're reading with the mind, but the tongue is still moving inside, silently. There'll come a time when you keep on persisting, your tongue also keeps quiet.
and you're now reading only with the mind. And the concentration required to read with the mind is so intense, you'll find every word of Bani you're not missing now. You're training your mind to go deep inwards. Bani kendi na, 909 Darshan Shabd, Bin rasna ustat krai. Sing his praises without your tongue. That's what Guruji is saying. Man maay jap bhagwant. Man de vich Rab da naam jap. Gur pure e dino mant. And this is received with grace from the Guru. This mantra you're singing. Mite sagal pੈ ਤਰਾਸ. ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ. ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ. And your wishes will be fulfilled. ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵਾ. Guru ਦੀ seva is full of rewards. ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ. And what he gives you is priceless. Sach is such alakh apeva. He is alakh and apeva. Mysterious, true and unseen. Rahav. Karan Karavan aap. He is the real doer. Tisko sada man jap. Again Guruji says, man de vich onu japna. Pray to God in your mind. Tiski seva kar neet. Sach sehaj sukh pavai meet. And you will receive sach sehaj. Through poise. And sukh pavai meet. Through peace you will receive, oh my friend. Sahib mera to para. He is powerful and great. Khin mein thapu thap banhara. He can create and destroy in an instant. This bin avar na koi. He is only one. Jan ka rakha soi. But kida rakha? Jeda jan. Nimarta de vich. Jeda kehanda main bada takda wan. वो तो नहीं रखा बंदा. ठीक है, you say तो बड़ा तगड़ा तो आप भी फिर रक्षा कर ला. But जन का रखा सोई. When you say you are निमाना and you seek his protection, come to in utter humility, वो जरूर रखवाली करता. He is our protector. कर कृपा अरदास सुनी जाए. Please listen to this prayer of mine. अपने सेवक को दर्शन दीजिए. वाह, हे वाहिगुरु जी मैंने तेरे दर्शन बख्श. Guruji tells us in many places in Sri Guru Granth Sahib Ji कि वाहिगुरु दे दर्शन होंदे आ. Now he can give darshan in any form. But invariably when you pray to a formless Lord through the Shabd, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਾਤ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੇਂ ਜਾਤਾ. ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. Through his jot, if you go deep inside, you will see his darshan through the jot. ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ जप जाप सब ते ऊंच जा का प्रताप. वो जो सब तो वड्डा ना जिसका प्रताप, his glory and radiance is the highest. Sing his praises. The next chapter also tells us, rely only on God. Birtha parvasa lok. It's a waste of time to rely on mortals. लोका दे भरोसा रखना व्यर्थ हुआ. ठाकुर प्रभ तेरी टेक. हे वाहिगुरु सिर्फ तेरी टेक हुआ. अवर छूटी सब आस. मैं सारी आसां ला दित्तियां. अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास. अचिंत बिना फिकर होके ना, बिना फिकर सारे फिकर ला के मैं गुणा दा खजाना जेड़ा वाहिगुरु मैं तेरे कोले आया हुआ. एको नाम ते आए मन मेरे. है वाहिगुरु, apart from the take, you must also take to Naam, recite his Naam, lovingly adore him to Naam. एको नाम ते आए मन मेरे. काल तेरा होवे पूरा. हर 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 गुण गाए मन मेरे. रहाओ तुम ही कारण. You see, we underestimate the singing of his praises. We always read Sarv Rog ka Aukhat Naam. It's true, Sarv Rog ka Aukhat Naam, but how does it become Aukhat Naam? The next line says Kalyan Roop Mangal Gun Gam. Je tu ode Mangal, his glorious praises you sing, फिर ही तेरे वास्ते औखत बनूंगा. So you have to read the two lines together to get the full import of what Guru is telling you. Sarv Rog ka Aukhat Naam. Naam is the medicine for all diseases. But how does it become a medicine? Kalyan Roop. It gives you emancipation. How? Emancipation from all disease and all problems and all obstacles. Mangal Gun Gam. ਉਹਦੇ ਗਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ. As you keep on singing praises with love and joy, his greatness, his glory, his infinite nature, his merciful nature, then you find that
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾ, it works on you. ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ is a direct address to God, because the relationship is very personal now. We must develop this. You are the doer and the cause. चरण कमल हर शरण, हे चरण कमल, तेरे चरण कमल, तेरे नाम दी मैं शरण लईया। मन तन हर ओही ਧਿਆਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਵਾ। ਅਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, and you with mind and body you sing his praises। ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ, always it is his ਓਟ, his ਆਸਰਾ which you have focus in mind। ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਦਾਨ, ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਨਿਦਾਨ। ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਹੁਈ ਜੈ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਹੁਈ ਜੈ, ਬੀ ਦ ਡਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨਸ ਫੀਟ, always live in utter humility। ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ, ਆਪ ਦੇ ਹਉਮੈ, ਆਪ ਦੀ ਆਪਾ। See, in Gurbani we have home. Home is a terrible rogue. But as you keep on eroding your home, you'll find to the final part, when you come to the final part, is your appa, is your conceit, your identity. Even that you must give up. And there are many shops which tell us that it must be a total surrender. अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। It's a total surrender. You can keep me or you can finish me off. I have come to you. Nothing is left behind. There is no hedging. I have come to you completely. And there are many shops like that which say you have to have total surrender. आप मिटाए मिली जाए, अंदिन त्याये नाम, सफल नानक एक काम। रोज ही नाम ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। This shabd also talks about God's countless gun. Raamkali Maharaj, Karan Karan Kareem. He is always gracious, Kareem. He is the doer. Sarv Pritapal Rahim. ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ, ਅਲਖ, ਅਪਾਰ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ, he cannot be described. Alak, he is beyond, he is unseen. And apar is infinite। खुद खुदाए बट बेशुमार, खुद ओ आप, ओ खुदाए वा। He himself is God himself, and वड बेशुमार वड्डा ते बेशुमार, he is infinite। बेअंत वा। ओं नमो भगवंत गोसाई, ओं नमो। ओं नमो इस ओंकार दे नाल जिन्हें रचना रची आ, the one who created the universe with one mystical sound। Namo means namaskar। I humbly bow to the creator of the entire universe। Om Namo Bhagavant Gosai। I salute the creator Lord। Khalak Ravraya Sarvathai। Oh Vaheguru na Khalak। Khalak is an Arabic word which means Kartar, Vaheguru। Ravraya, सारे पासे रमया होया वा, सारी थावां ते भी रहा। जगन्नाथ जगजीवन माधो। जगन्नाथ जगत ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਧੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਵਪਤੀ, the Lord of all Maya in creation। ਪਵ ਪੰਜਨ ਰਿਦ ਮਾਇਆ ਰਾਧੋ। ਪਵ ਪੰਜਨ, he removes all fears। Again Guru Ji says, ਰਿਦ ਮਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਰਿਖੀਕੇਸ਼ में is a Sanskrit word ਰਿਖੀਕੇਸ਼। All our senses, he is the master of all our senses। For example, you can smell, you can see, he is the master who gave you the gift of sight, the gift of smell, the gift of taste। ਉਹ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਵਾ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਗੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੋਬਿੰਦ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
Puran Sarbatar Mukand. A Rab de Gonwa. All these are God's attributes, and these are his praises. He is Puran, capable of everything. Sarbatar, Mukand. He gives you mukti. He emancipates you, he liberates you. Merwan Mola Tui Ek. He blossoms in every aspect of creation. Peer Pekambar Sheikh. He is a spiritual teacher. In reality, he is a spiritual guide. See, we may have a Satguru, but Guruji tells us that actually he is the real Guru, God himself. Nankar, Shekhar, Shegur, Shev Des, Gur Eko, Ves Anek. So, Peer Pekambar Sheikh. Dila ka malak kare haak. Andro haak karta, bolda wa. And haak also can be pure. Haq dindawa, dispenser of justice. Quran Kateb te Pak. Pak means purer. He is purer than the Quran and the Kateb. Why? Because he is, the Quran and the Kateb can only give you certain aspects of his guna. His guna infinite. And ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ. Quran Kateb te Pak. Narayan Narhar Dayal. Narsingwa. Narhar Dayalwa. Merciful. Ramat Ram Katkad Adar. Vyapakwa. Sare paase ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ. Basdev Bas Sab Thai. Basdev. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾ. Basdev. ਬਸ ਸਭ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸਦਾ ਵਾ. ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਕਿਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ. His wondrous play cannot be described. He is beyond description. Mer daya kar karne har. O merciful, compassionate God, please give me your mercy. Pakht bandi, bandagi de sirjanhar. O my Creator, Lord, give me bandagi. Give me your worship. Give me your devotion. Kaun Nanak Gur Khoye Param. The Guru has taken away all my param, my delusions, my doubts. And when he took away all my doubts and my delusions and my illusions and my misconceptions, what did I find? Eko, Allah, Par Brahm. He is one, he is Allah, and he is also Par Brahm. Allah is the Muslim God, Par Brahm is the Hindu God. He is one to all. ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ. The next chapter Guruji tells, speaks of the benefit of singing praises doing Naam. They said, there's a lot of repetition, but the repetition is so wonderfully done in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, you don't get bored. At the same time, it's delicious. It sings of so many aspects of his infinite guna. Raamkali mein, you know, Kod janam ke bin se paap. See, and in all this repetition, Jaina which repetition out of the almost 5,894 shabds in Guru Granth Sahib Ji, almost 6,000, जे किनका भी एच वास जावे ना किनका एक जी जीव सावे ताकि मैं मंगनी ना आवे. सो कोट जन्म के बिन से पाप करोड़ा जन्मां दे पाप मिट जाते आ किवें हर जपत ना ही संताप. हरि दा नाम जप जप के कोई संताप कोई सिवन से जपना इट मीन सिमरन पाठ करना साध संत करना ते सेवा करनी हर जपत ना ही संताप. गुर के चरण कमल मन वसे. गुरु की बाणी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਵਸੇ ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਤੰਤੇ ਸਭ ਨਸੇ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣੀ. ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਾਲਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਵਾ. ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਪੂਰਨ. ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਅਕਥ. His story is beyond description. It's infinite. There's no way you can finish the story of God. Odi Gani Akatva. Sachi. And it's true. Prabhapuran. It speaks of the perfect, complete Lord. Jyoti Jyot Samani. Jyoti. Jyoti is the one who lights the Jyot in you, God. Jedi one Jyot, tere vich jodi na. ਵਸਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ. He unites your jyot with his jyoti.
with himself, merges you into his jyot. Rahau. Trishna Puk Sab Nasi. Greed and desires are extinguished. Sant Prasad Japya Abnasi. Guru Di Mel Nal. O Jara Abnasi, immortal Lord, you sing his praises. Rain Din Prabh Sev Kamani. Night and day sing his praises. Har Milne Ki Ye Nishani. We also told, isn't it? Prabh Milne Ki Ye Nishani. Man Eko Sacha Hukam Pashani. Rain Din Prabh Sev Kamani. Har Milne Ki Ye Nishani. मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल सारे जो कृपा हो जावे ना all your bondages are broken. गुरु का दर्शन देख निहाल. You see the Guru's darshan. गुरु दी जोत वेख के निहाल हो जाएगा. गुरु दी जोत वाहिगुरु दी जोत इको ही आ. गुरु पार ब्रह्म एको कर जान. परा पूर्वला कर्म बने आया. ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ. ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾ. There will come a time when the seed of Naam which you have planted will one day grow and bear fruit. And when it bears fruit, what it means is you get Gur Prasad. हर के गुण नित रसना गाया. हर के संत सदा कुर्बान, सदा परवान. हरि दे संत ना, the Lord's saints are acceptable everywhere. Sant jana mastak nishan, and on their masta, on their matha, there is a nishan. There is an insignia of the Lord's grace upon them. Das ki rain paye je koi, and one who is blessed with to live in humility at the feet of the saint Guru, Nanak, tiski paramgat hoy, odi paramgati hundi hai. Guruji then tells us that although God is formless and works unseen, Bani tells us he will manifest himself, give his darshan, he is pleased with you. Of course, darshan does not come easy. It is a very long, tough journey. Guruji कहते हैं, you must yearn for his darshan. Darshan को जाइए कुर्बान, चन कमल हृदय तर ध्यान. You must ask for his darshan also. Mani tells us many places. Darshan प्यासी दिन रात चितवन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नान कर संग मीत. सुनियार हमारे सज्जन करो बिनंतियाँ, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिर को जंतियाँ, तिस 10 प्यारे सिर तरी उतारी. एक भोरी दर्शन दी, थोड़ा जा भी दर्शन दे दे मैनू. ये प्यार दी बाणियाँ. दर्शन को जाए कुर्बान, चरण कमल हृदय तर ध्यान. ओदे चरण कमल, his lotus feet is बाणी, हृदय विच ध्यान तर ओदा. Place it with loving devotion within your heart. तूर संतन की मस्तक लाए, निमरता विच वर्त, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए. And internal cleansing takes place. अंतर्गत तेज मलना. जिस पेटत मिटे अभिमान. As you meet the Guru, you will find your ego gets eradicated. Par Brahm. And as your ego goes out of the window, you find God is everywhere. Par Brahm sab nadri aave, kar kripa पूर्ण भगवान. You find the gracious Lord is everywhere. रहो. गुर की कीर्त जपिए हर नाम. गुर की कीर्त किया. गुर की कीर्त में sing his praises. गुर की भक्त सदा गुण गाओ. So गुर की कीर्त, singing the Guru's praises is to sing his Lord's name. But Guru di bhakti sada gun gao. So kirti and bhakti, Guruji says there's a difference now. Jara bhakt hunda na, oh sada gun gaunda. Kirti, yes, you sing his praises, but Guru di bhakti means to sing his praises always, sada gun gao. And Guru ki surat nit kar jaan. Guru di surat kiya. Dungi soch प्यार दे विच जिहड़ी रब दे चरनां विच डुबी रहिंदी आ, चुभी रहिंदी आ. गुर की सुरत निकट कर जान. And we will, when you look at things with the consciousness of the Guru, you find God is everywhere. सारे पासे नेड़े दिसदा. गुर का शब्द सत्कर्मान. And with the Guru's grace, you find the Guru's shabd is eternal.
Gur Bachani Samsar Sukh Dukh. To the Guru's Bachan, you find Dukh te Sukh. To the Guru's Bani, you start treating happiness and sadness with the same approach. Kade na Byape Trishna Pukh. The Guru de Bachana Rai, Guru di Bani Rai, you will find all your greed is eradicated. Man Santokh Sabd Gur Raje. Man Santokh aa janda, which Santokh, contentment comes to your mind. Shabd Gur Raje. Guru de Shabd rahe banda antar Raje janda. Jab Gobind Padde Sab Kaaj. As you keep on singing the Lord's praises, we all make mistakes. Huh? We all make, sometimes we do sinful things. But as you keep on singing His praises, Padde Kaaj Jinda, He saves you from disgrace. He hides your faults. And if you are very, very lucky with Guru's grace, He can wipe out all your faults. Jab Govind Padde Sab Kaaj. Gur Parmeshwar Gur Govind. The Guru is God Himself. The Shabd Guru is God Himself. Gur Data Dayal Bakshend. And He is always merciful. Guru Charni Jaka Man Laga. Guru Di Bani Nal Ji da man jod gaya na. Nanak Das. Tis Purna Paga. Ode Purna Pagwa. I mentioned this before. Okay. Gurbani you find very often Vade Pag. Vade Pag Pete Gurdeva. Gurpura Pete Vade Pagi. But then when it comes to Darshan, invariably the word used is Pure Pag. Now your destiny has been perfected. So when you read Bani, you look out for Pure Pag, Vade Pag. Then you realize Guruji is talking at Kedi Avastha di gal kar rahe hain. Now, in this Shabd here, there is a very stern reminder to all of us. To man, a very stern reminder. Kis parvase bichare pavan? Tu kede asrite tu turya phirda wa? Mood mugdha. Hey murkh bandya, you ignorant fool, tera sangi kavan? Asli sathi kaun wa? Now these are very tough questions, but we must ask all these questions to ourselves. Ram sangi, tis gat nahi jane? So Guruji has posed a question, mood mugdha tera sangi kavan? And Guruji then answers, Ram sangi, the all-pervading Lord is really your true companion. Tis gat nahi jane, but you never realized this. And instead of realizing God is your true companion, the 5 evil passions, Kaam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, jede batware who are really your robbers, Panch batware se meet kar mane. There is a tone of incredulity in the whole Shabda. So kar save the Rudre meet. This is what you must do. Serve the house of the Lord by which you can be saved. Serve the house of the Guru by which you can be saved. Gun Govind Ravi Din Rati. Guru Govind Vaheguru de Gun Simrane Din Rati Saad Sang Kar Man Ki Preet. Saad Sang de vich man de vich preet pav de naal raho. Jan behano ahankar adwar. Tu ta aapda janam ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਲੰਘਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਖਿਆ ਸਾਧ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਸਵਾਦ ਵਾ ਪਰਮਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਤਰ ਮਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ काम ना आवे सो कार कमावे. All your deeds are spiritually worthless. You may be a very rich man, but काम ना आवे सो कार कमावे. Whatever is of no use to you on the spiritual path, you indulge in that. आप बीज आपे ही खावे, and whatever you have planted, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੀਜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ. ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ. राखण को दूसरा नहीं कोई. No one else can protect you. तो निस्त्रे जो कृपा हो. Only His grace can save you. पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम. The final pada is of अरदास. हे वाहिगुरु तेरा नाम ही मैनू पितर कर सकता. मैं पापी हाँ. अपने दास को कीजिए दान. मैं दास बन के आया तेरे दर ते. मेरे ते मेहर कर
कर कृपा कत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी, मैं तेरी शरण पकड़ी है। Now, in this Shabd, after the last Shabd is quoted, Guruji talks about a liberated Sikh, speaks this Shabd in joy and gratitude. ए लोके सुख पाया, मैं संसार दे विच, this is a Sikh who has received Guru Prasad. वो कहता मैं इस दुनिया विच मैं सुख पाया, ए लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्मराया, मैनू हुण धर्मराज दे विच गाड़ी जाण दी लोड़ नहीं, मैनू उत्थे हिसाब किताब देण दी लोड़ नहीं। हर दरगाह शोभावंत, हरी दी दरगाह दे विच मैनू मान मिलिया वा। पुण्य गर्भ नहीं बसंत, पुड़ के मैं जन्म मरण विच नहीं आवांगा, मेरा जन्म मरण मुक गया। जानी संत की मित्राई, संत गुरु दी मित्रता मैनू मिली आ। आई हैव रिसीव्ड द फ्रेंडशिप एंड द वैल्यू ऑफ द लॉर्ड्स सेंट्स, द गुरु कर कृपा दीनो हर नामा। एंड व्हाट डिड द गुरु डू? ही इन हिज ग्रेस ही blessed me with the Lord's name, पूर्व संजोग मिलाई, ते मेरा संजोग उन्हें बना दिता गुरु ने, ते मैनू मिलाप बना बख्श दिता वाहिगुरु दे नाल रहो। गुर के चरण चित लागा, गुर के चरण बाणी नाल मेरा प्यार पै गया, तन तन संजोग सुभागा। मैं अपने आप नूं बड़े संजोगां वाला भागां वाला समझदा वां। संत की तूर लागी मेरे माथे, निमरता विच गुरु संत दी मैनू संगत, मैं गुरु संत की संगत की, किवलिक दुख सगले मेरे लाथे, ते सारे मेरे दुख लथ गए। साध की सच टैल कमानी, सो सच टैल कमानी। सो आई डिड दिस सेवा ऑफ द साध गुरु, बट सच टैल की थी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई लव्ड बीइंग इन हिज सेवा। तब होए मन शुद्ध प्राणी, एंड इफ यू डू हिज सेवा मन शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता। जन का सफल दर्श डीठा, ये जन गुरु नूं जन आख्या, गुरु जन का सफल दर्शन डीठा, नाम प्रभु का कट कट उठा। ते ज्ञान आया कि सारे पासे रब दी जोत वा। मिटाने सब कल कलेश, सारे झगड़े दुख मुक गए। जिस ते उपजे तिस में प्रवेश, ते जिस मूल तो तू पैदा होया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਅਨੂਪ ਗੋਬਿੰਦ, the wondrous Lord has become manifest, he has revealed himself। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਨ, the perfect Lord is always forgiving and merciful। Now the next shabd is it's a very mysterious shabd. See, in Bani we have shabds like this, especially by Bhagat Kabir ji. They are known as Ult Bansi. Ult Bansi is like, because Bani is in poetry form, where the opposite nature is shown. See, we all have a normal nature which we see, but then when there is a transformation, that is described in very mystical terms. And literally, Ult Bansi means upside down poems. Of course, you cannot use that to describe Bani, but in literary terms they use that. In fact, in India there are a few universities where they have chairs of Bhagat Kabir studies, and scholars have gone crazy over the years trying to understand what Ult Bansi is. Only when you read Gurbani in the context of Guru Granth Sahib Ji and treat Bhagat Kabir Ji's Bani as Satguru's Bani, फिर अंदरों फिर ज्ञान बख्शता गुरु साहब, ज्ञान रंजन गुरु दिया. So in this Shabd we have lots of animal nature inside us. When the transformation with Naam takes place, the ferocious animal nature, the evil animal nature in all of us becomes very tame. So Guruji says, Gau ko chare sardul. Now Gau, Gai, cow. See, our senses in Sadhu Pasha, in saint speak, are referred to as cows. They will go to pasture in any way you take them. ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੱਲ
जोड़ेगा ना वो उस चीज़ खाएंगे. So now गऊ को चारे सारदूल. सारदूल is a शेर. ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਭਾਅ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ. ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, it becomes so tame. The egoistic nature has now become so tame that it now takes the senses, which are cow-like, to the proper pasture. ਕੌਡੀ ਕਾ ਲਖ ਹੁਆ ਮੂਲ. ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, which is only worth a penny, now has become lakh hoa mool. It's become very priceless. See, जो नाम जपीदा ना, गोविंद 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 जप, नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना. अड्डी दमड़ी दा शीपरा छिंबा लखा दा हो गया. So Guruji is using that here. कौडी का लख हुआ मूल. बकरी को हस्ती प्रतिपाले. जेड़ी बकरी ना, जेड़ी डरपोक बकरी. We all have a very what you call cowardly nature in all of us. But as we do naam, जेड़ा हाथी ना, जेड़ा हाथी जेड़ा बड़ा ताकतवर वा मन. See, the hathi in Gurbani, the hathi, the elephant imagery has been used for different. Elephant is used for lust. Kamal mangas bas kina. Then hathi is also used for man to magal hoye reha, niksha kyo kar jaye. The very egoistic mind is also referred to as a hathi. And mantan rakh ke aake Aaron jo sirde. You'll find बकरी को हस्ती प्रतिपाले. जेड़ा ताकतवर हाथी ना मन, हुन जेड़ी डरपोक अवस्था सी, जेड़ी डरपोक सोच सी ना, उन्हें प्रतिपाल दे. The elephant nurses the goat. The strong, powerful elephant mind now gives solace to the cowardly nature of man because he has taken to Naam. अपना प्रभु नजर निहाले. When God gives His glance of grace, कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे, हे प्रभु बर न साको बहुगुण तेरे. तेरे ऐसे कितने गुण हुआ मैं बयान नहीं कर सकता रहा. This mass न खाए बिलाई. Now the transformation has taken place. The cat-like nature to pounce on things earlier. Now the cat sees mass, sees some meat in front of it, desda onu. But the hon jedi Trishna Rupi jedi, the greedy cat has now become in so much of contentment and santokh. He sees meat in front of it, it does not pounce upon the meat anymore. This mass ne khai bilai, maha kasab shuri satpai. Kasab, vada kasai jeda krodh si na, the anger in you, which was a terrible butcher-like emotion, churi satpai. On churi, jada kard hundi na toka o sut dinda. The merciless butcher anger has now thrown away his murderous knife. Karnhar prabh hirday utha. Hunta, the wondrous Lord has manifested in his heart. Karnhar prabh hirday utha. Guruji is using animal imageries in all of us to describe the transformation which has taken place with Naam. Phathi machli ka jala tuta. ਜਿਹੜੀ मच्छी सी ना, मछली का जाला टूटा. जीव जो बंधना में फंसा हुआ सीगा ना, like the fish always gets caught in the hook or it gets caught in the net. The entire net has been taken away. वो सारा जाल, सारा हिसाब किताब उदा मुक गया. फाथी मछली का जाला टूटा. सूखे काश हरे चलूल. Now, there are some people who are very dry-hearted. They have no pejdenige, they have no compassion, no love in themselves. But now they become chalul.
The shriveled and dry heart has now blossomed into life and is drenched with love. Suke kash hare chalul, uche thal, phule kamal anup. Now in the Thalisa, Maruthal is a desert. In the high desert of the mind, there is now vegetation and blossoming of flowers. It was earlier a dry mind without love and compassion for anyone, but now it has blossomed forth with love. Agan Nivari Sadgur Dev, and the fire of greed and fire of all passions has been doused by the Guru himself. Sevak apni layo save. He has now put the Sevak to his seva. Akrit kinaka kare udar. He even takes care of the ungrateful wretches. Prabh mera hai sada deyar. He is always merciful. Sanjana ka sada sahai. Chan kamal nanak sarnai. It's a very difficult shabd. It takes a long time to be able to absorb this. But the gist of it is Guruji is using animal nature of man which has been transformed into something wondrous by Naam. Again, another shabd which talks about the experience when you get his grace. Panj Singh rakhe Prabhamar. Now the 5 evil passions. Guruji described them as 5 tigers. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. But a 5 tigers, Prabhu ne aap hi maar ke. The 5 ferocious tigers have been killed. Das bigyadi laini war. Now bigyadi. These are the she-wolves. Jede jeev istre naal jede 5 karm indre, 5 gyan indre na. Das bigyadi. The 5 she-wolves laini war have been thrown out. So you don't have greed in you now. You don't have bad thoughts in you now. The Guru has driven them out. Teen avat ki chuki ker. Teen. See, Maya has got 3 shades. At the very lowest is Tamogun. Slightly higher is Rajogun. And the highest of Maya is Satogun. But it's still in Maya. So you find there, and these are, and if you're in Maya, you will find as if you are going into a whirlpool. It keeps on, the cycle keeps on going. Unnu kehande avrat. Whirlpool. Teen avrat ki chuki ker. Maya no longer causes distress because the whirlpool of its 3 shades has been removed. Satsang chuke pै फेर. In satsang मेरा जन्म मरण का डर सारा मिट गया. Simar simar जीवा गोविंद. I lovingly remember the Lord, kar kripa rakhe udas apna, and He saved me with His grace. Sada sada sacha bakshin. He is always merciful and gracious. Daj gaye trin paap sumer. Jede mere paap si na, all my sins, they were stacked together as high as a mountain. Sumer parvat और के मेरे इन्ने पाप से के इकट्ठे हुए, पर जो गुरु की कृपा हुई ना, दाज गए में सड़ गए. Trin is like a straw, like a blade of grass. He says, my huge mountain of sins were burnt away like a blade of grass, like a blade of straw, by the Lord's grace. Jap jap naam puje prabhu pair. I keep on reciting His Naam and I adore His Bani. Andarup Prakti Sabthan, the wondrous Lord, the embodiment of all bliss. He manifested Himself in everywhere, in every place. Prem Bhakt Jori Sukhman. Now Prema Bhakti Kiti. Prema Bhakti is naam jodya. Te main sukh manaya. Sagar taryo. It's so mysterious. Sagar taryo bashar khoj. You know, we always talk about the world ocean, but Guruji says, I swam across, I went over the world ocean, bashar khoj. Bashar is bacha, khoj is a jedi khuri hundi hai. You know, when you have a small calf, when it goes into something, a bit of a wet piece of mud or sand, you leave a footprint. It's not even a full cow, it's a small bacha. वो the bashar khoj. So what Guruji is saying is,
What was the impassable world ocean is now easily crossed over. It is so small, it has become so small through Naam that it is not even like it is just as small as the footprint of a calf. I managed to easily cross over the world ocean. Bashar taryo, sagar taryo bashar khoj, khed na payo na pun roj, na dukh ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਨਾ ਪਊਗਾ. I shall never again have to endure suffering or grief. Sinth samaye katke maaye, the entire ocean of the world has now samayo, is now been contained in the katke maaye, is now contained in the body. But it's not difficult to do that because karnhar ko kish achaj na hai. उस कर्णहार प्रभु वास्ते ना ये कोई हैरानगी कोई वाली कोई गल नहीं की वो वास्ते कोई करना कोई औखा कम नहीं. जो छुट हो तो जाए प्याल, जो तो मेरी वो नाल लिव छुट जावे ना, when my consciousness is distant from God and I do not remember Him, जो तो मैं उन्हें भुला देना ना, तो जाए प्याल, प्याल is deep down to the netherworlds. When I forget Him, my spirituality plummets downwards. Jo kaadyo to nazar nihal. And when He removes me from the pit of ignorance, I find as I see Him and as I glance upon Him, I'm enraptured. Jo kaadyo to nazar nihal. Now, papun hamre vasnai. Paap te pon mere vas vich nahi ge. Because I have merged into His hukam. ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਵੇ ਕਰਦਾ ਉਹਵੇ ਕਰਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪਾਪ ਪੁਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ ਹੈ. ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾ. ਮੈਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਵਾ. ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. If you do not remember His name, His guna, His nature, countless miseries will come along your way. Only as you do Naam will you gather through everlasting wealth of divine enlightenment and His grace. Natan Tera, you must realize this body is not ours, it is given to us by Him. Natan Tera, na man toye, na Tera Srir Tera, na man Tera va. Maya mo vyapya toye. You are caught in perishables. Maya de moh de vich tu phasya hoya, where nothing belongs to you. Kudam kare gadar jo shale. You engage in all kinds of kudam. When we do, all of us are from Punjabi homes, when you come back from the football field or the hockey field and you're full of sweat, your mom will tell you, "Kitho kud ke aaya?" Where did you exhaust yourself with all kinds of sweat and come home? So kudam kare gadar your shale. You engage in all kinds of sports, exhaust yourself just like a baby lamb. Gadar your shale. ਭੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਡਰ ਜੋ ਸ਼ੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਅਚਿੰਤ ਜਾਲ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਪੇਲ. You are unaware of the net of death which will encircle and snare you soon, anytime. Achint jal kal chakar pel. So what Guruji says is, tu kodada phirda, na tera sਰੀਰ tera, na man tera, tu ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਮਨਾ. ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾ ਨਾਮ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੰਗ ਸਹਾਈ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਗਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਸਾਚਤਨਾ. ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹਾਓ. ਉਹਨੇ ਕਾਜ ਨਾ ਹੋਵਤ ਪੂਰੇ. ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਜ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. Your unfinished worldly affairs will never be resolved. They keep on becoming unfinished. ਉਹਨੇ ਕਾਜ ਨਾ ਹੋਵਤ ਪੂਰੇ. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਸਦ ਹੀ ਚੂਰੇ. And when you are driven by the intoxication of lust and anger and pride,
Sansadi chure, you will always live in regret. Kare bikar jere ke tai. You cheat and live for your self-interest. Gafal, sangna tasua jai. Hey murkha, tere naal tasu. Kuch bhi nahi tere naal jana. Rata parvi, kinka parvi tere naal nahi jana. Tart to anak shal jane. Te ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ you know all kinds of clever tricks and frauds, but in reality ਕੌਡੀ ਕੋ ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਨ ਹੈ। ਜੰਮੜੀਆਂ ਖਾਤਰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਡੀ ਕੋ ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਨ ਹੈ। You actually throwing dust upon your head. ਜਿਨ ਦਿਆ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮੂਲ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਟ ਆਲ। ਮਿੱਥਿਆ ਲੋਭ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸੂਲ, ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਸੂਲੀ is a something by which you are pricked and poked. You will be poked and pricked by the germs to hurt you. Mithya lobh na utre sool. All this false greed which pokes you will never emancipate you. Par Brahm, but if the Lord is merciful to you, Par Brahm jap pae dayal, eman hova sadrawal. Then you go towards in humility and you go towards the Guru, Sadguru. Otherwise you live in homen as if you know everything. ਹਸ ਕਮਲ ਦਾ ਲੀਨੋ ਲਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਐਂ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now we come to the next shabd. You become fearless as you keep on singing his praises. Worldly fever and anxieties won't bother you anymore. Raja Ram ki sharnae. ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ all pervading Lord, I've taken his sanctuary, and as I take God's sanctuary, see, when you take the sanctuary of mortals, those who know a bit of Ridhiyan, Siddhiyan, Bomo, Samis, you will find you have endless worries and problems. But when you just stick to the Guru and God, you will find your worries will just dissipate away. He takes away all your anxieties and worries. Because He's pure and clean and He's got no ulterior motives. He is only there to guide you to get closer to God. It's not an easy path, of course. It requires tremendous restraint and tremendous self-control. But if you are sincere, the self-control, He converts into love. So you are no longer doing it because you are controlling yourself. You are doing it because you love Bani, you love being in the Guru's Sharan. You know that He is going to save you. And He always is very merciful. Raja Ram ki Sharanai. Nirpapai. You become fearless. Govind Gun Gaon, as you sing His praises. Saat Sang Dukh Jai. Saat Sang karte karte sare dukh chale jante hain. Jaake Ram base man mahi. ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੋ ਜਨ ਦੁੱਤਰ ਭੇਖਤ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੁੱਤਰ। He will not have to endure or face the impassable world ocean. ਸਗਲੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ, all your spiritual affairs, your worldly affairs certainly get settled. He settles all your worldly affairs. ਸਗਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਪਣੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। See, this is the first part, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। Slowly you have to go inside, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਹਾਥ ਗੁਰ ਧਰੈ ਤੋ ਦਾਸ ਅੰਦੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੈ। On whose head, on his forehead, the Guru places his gracious hands. How can such a being have any anxieties? Janam janam ki chuki kaan
Sare odi mohtaji, all his subservience is all gone. Because he becomes bemohtaj like God himself, like the Guru himself. Pure Guru par kurban, sadan balhar jane Guru par. Always be grateful to your Guru. Gur Parmesar, pet nihal. Mil ke Guru nu na nihal, anand milda va. So dasan paye, jis hoye diyal, but only upon whom he gives his grace, his mercy, receives the Guru's darshan, Vaheguru's darshan. And as I said before, many times those darshan jyotrai hunde. Not that he is limited, he can give darshan in any form. When he wanted to save Prahlad ji, he took on the form of Narsingh. Narsingh Roop de darshan dite. He can give to save his sevaks, he can take any form. But generally, in the normal course of events, in the course of Prema Bhakti, he gives darshan in the form of Jyot. Gur Parmesar pet nihal, so dasan paaj is hoy diyal. Par Brahm jis kirpa kare, saad sang so paujal tara. Jaise kirpa ho jante na, saad sangat ye jehड़ा संसार सागर हुआ तो बंदा तर जाता हुआ. अमृत पीवो साध प्यारे, oh my beloved Sikhs, enjoy the experience of Naam. And when you enjoy the experience of Naam, Mukhujal Sache Darbar. The result is here and there. Your face will be radiant and bright, which is grace. Anand karo taj sagal bikar. Paide kam shad ke anand mano naan khar jap utro par. Harita naam jap ke par utar jao. Another shabd which talks about the transformation which ensues, which happens when your avastha rises to karmakhand. Idan te basantar page. See, Idan is balan, small firewood. And normally when you have small pieces of wood, you put them in the fire will quickly consume them. But now, the transformation of the Sikh has taken so tremendously. His avastha is risen to such a fascinating avastha. Idan is another, jade small woods hunde na. Idan is another name for paap. Paap te hun ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾ ਦੌੜਦੀਆਂ ਵਾ. Normally fire will quickly consume all the wood, but now the avastha has risen to such a high level that the small woods which were actually sinful activities, the fire of Trishna and the fire of all vices runs away from it. Instead of consuming it and being happy with the पाप तो हुण अग भज जाती आ. माटी को जल दे दिते आ गए. शरीर रूपी मिट्टी ना, दिस बॉडी इज एक्चुअली अर्थ इटसेल्फ, दे दिते आ गए. हुण दुनियावी पानी हुण छड़ जांदे आ. The other translation is that between the earth and the oceans, he now keeps the water and the earth separate. But जय दिसते आ गया सारे पासे ना, हुण दुनियावी पानी कोई असर नहीं करता शरीर रूपी धरती ते. ऊपर चरण तले आकाश. हुण तां ऊपर चरण, ऊपर हुण चरण वाहिगुरू दे चरण जुड़े होया. तले आकाश, जड़ा उपया ते तले आकाश. So you find the नाम दा जेड़ा बीज बीजा सी ना, the charan, the roots are now firmly implanted, and the tree of love which has been planted through Naam is now going downwards. The roots are very firmly planted in the high avastha. ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध कियो प्रकाश.
ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੰਧ, ਸਿੰਧ ਇਸ ਓਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਰਥ ਹਰ ਜੋ ਆਪ, ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਜੀ ਭਗਤਨ ਕਹਿ, ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਤਾਕੋ ਜਾ। The saints do not ever forget him even for an instant. Keep on reciting his name always around. Prathame makhan pache doodh. Normally you have dudh, you have to bring in milk, then you have to churn it to get butter. But now the churning has already taken place already. Now you find, what you find is butter itself. And milk comes secondary. The essence, butter of Naam, is given priority, and the rest of milk comes after that. So it's a complete transformation. Melu kino sabun sood. Sasinu karna babba onkar, nanenu onkar. Sabun here actually Naam. Naam रूपी साबन ने ना सारी मैल दूर कर देती, सारी मैल ला देती। पैते निरपो डरता फिरे। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੈ, whatever was the fear in him is now very fearful itself. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ, ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ। There's a शब्द at Ang 151 where Guru Nanak also uses similar wording. डर कर कर डर 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 जाए, सो डर के हा जित डर डर जाए। Guruji using that imagery here. पैते निरपो डरता फिरे, होंदी को अनहोंदी ही रहे। होंदी, to have an identity, अनहोंदी ही रहे। God does not have a separate identity like we have. So our identity is now, our realization of being separate from God is eradicated. Is our separate identity has been removed by the formless one, who has no hond as such. Hondi ko anhondi hirai, dehi gupt bidehi disai. Now, once the transformation takes place, avastha rises, you don't see bodies in front of you. You don't see dehi anymore. Jedi dehi a gupt ho jandi a. Bidehi, what is inside. What is inside you is the jyot, which is without form. You see that. So, jyoti desdiya. Dehi gupt bidehi disai. The translation is wrong. The real form of God is hidden and the transcendent body is seen. No, that translation is wrong. Sagle saj kart jagdish hai. This transformation is really His doing. Ye sare odi kite. Odi avastha de naal hi hunda. Thaganhar anthagda thag hai. Thaganhar. What could be easily cheated and defrauded? Anthagda thag hai. The ordinary human has now become capable of deceiving the Anthagda, Maya. You see, the person who always used to get deceived was a human being. And the one who could not be deceived was Maya. But now the avastha has become so high that the deceiver Maya can now be deceived, the one who was his victim earlier. Because ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਉਸੇ ਮਨਮਾਏ। ਠਗਨ ਹਾਰ ਅਨਠਗਦਾ ਠਾਗੇ, ਬਿਨ ਵਖਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਲਾਗੇ। Now Naam has got no real physical form itself. ਕੋਈ ਵੱਖਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਬਖਿਆਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਿਮਰ ਸਾਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। In this Shabd, Guruji tells us about the power of God as compared to the temporary but horrible influence of Maya. It's very attractive, but it's temporary and it's a horrible influence of Maya. Raamkali Mela Panjo. ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਥੀਆ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਆਣ ਬਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦ ਵਰਡ ਬਿਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਦਿਸੈ, ਇਨमें किशु न संग लिया। You can see your children, your wife, your spouse, and your wealth. इनमें किशु न संग लिया, but none of this will go with you. बिखे टगोरी खाए पुलाना. बिखे is poison. Tagori is a deceiver. You have eaten of the fruits of the poisonous deceiver Maya, and khai pulana, and you have deceived yourself. Maya ਮੰਦਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਨਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੁੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੇ ਕਿਰਤ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਰਭ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਪੁਰ ਕਮਾਣੇ ਛੋੜੇ ਨਾ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਥਣਗੇ। ਜਮਦੂਤ ਗਰਾਸਿਓ ਮਹਾਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ ਅਵਰਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ਕੱਢਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਸੇ ਪੋਏ ਪਾਰ ਥੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ ਅਵਰਾ, ਤਿਸ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਹੁਤ ਹਇਆ। ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤ ਦੁਖਣ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫॉर causing trouble for saintly ones, ਦੇ ਬਿਨਾਸੀ ਮਹਾਂ ਖਿਆ, तो नाश हो जाएगा। जिन्हें निवाजे तिनी साजे, आपे कीने संत जया। जिन्हें प्रभु जी ने सारे बनाए ना, उन्हें ही संतां दी जय, ਉਹ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਨ ਦਾਸ ਕੰਠਲਾਏ ਰਾਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਇਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਸ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। Now in the next shab Guruji tells us, God is always gracious and helpful. Remember him always. रामकली में अपना ऐसा पूरा गुरुदेव सहाय, सहाय is मददगार, he is always helpful and full of support. जाका सिमरन बिरथा ना जाए, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ, remember him lovingly, is never a wasted effort. ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲ ਹੈ, not a single effort towards reaching out to him is ever wasted. Always will be chalked up to your account. ਰਹਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਤ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ, when you experience, ਬੰਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਧੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਮਜਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਧੂੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਂ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਕਾਲ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਤਨ ਕੇ, ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਨ ਕੇ ਵੀ external also becomes resolved. ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ is a very mystical, subtle dimension. In Asa Ki War we have this pankti, ਕਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। When the Guru in his mysterious ways puts his hands upon your forehead, he wipes out all your evil inclinations and badness and your karmas. जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾ।
ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਉਹ ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨ, always be grateful to God। ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾਨ, ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਜੇ ਬੇਕਾਰ ਬਿਨ ਸੇ ਅਪਮਾਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਈਏ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, always remember the one Lord, not many lords, one Lord। ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਕਟ ਕਟ ਰਬ ਰਿਹਾ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਦਰਸ ਦੇ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਵਿਆਸ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। I have set my hopes in actually being blessed enough to see you। ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਚਿਤਵੈ ਸਚ ਅਰਦਾਸ, daily I pray for this with a sincere heart। God, please bless me with your darshan। ਦਰਸ ਦੇ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਵਿਆਸ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਚਿਤਵੈ ਸਚ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਲੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਮੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਣ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।